Hello everyone, welcome to Avision Institute. I welcome you all to our YouTube channel. Welcome to Daily Dose of Vocabulary based on the Hindu editorials, and like every day I'm again here with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials. So we'll start our session with our motivational line. Before that, a very good morning to you all, and let's see what is our motivational line for today. For today, our motivational line is: the best revenge is massive success. So, this is what we all should remember, and we all should know this, that it is not right to take revenge. Revenge in Hindi it means प्रतिशोध लेना. तो प्रतिशोध आप किसी की क्षति पहुंचा पर या किसी को क्षति पहुंचा कर आप प्रतिशोध लेंगे तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, राइट. ये बिल्कुल सही बात नहीं है. प्रतिशोध लेना या रिवेंज लेना किसी से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. बट येस, रिवेंज लेने का एक और प्रोसेस है, एक और पद्धति है जिसके ज़रिए आप रिवेंज भी ले सकते हो और आपको कोई बोलेगा भी नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने किसी की क्षति पहुंचाई, यू डिड हार्म टू, यू हार्म्ड समबडी, ऐसा आपको कोई नहीं कहेगा. So what is the process to take revenge? The best process to take revenge is massive success. अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो जाए, बहुत सक्सेसफुल होकर किसी ऐसे लेवल तक पहुंच जाए जहाँ की सब देख के आपको दे आर फीलिंग जेलस, जिससे आप रिवेंज लेना चाहते हो, अगर वो देख के जेलस फील हो जाए, अगर उसको देख के जेलस फील हो जाए, इफ़ ही और शी गेट्स जेलस seeing you, then that is the best revenge you can take from anybody else. So this is what should be our positive side of taking a revenge, right? We should never harm anybody. हम लोगों को कभी किसी को harm नहीं करना चाहिए. But if you want to take revenge, this is the best revenge that we can take, right? So with this motivational line, let us see what is our first vocabulary word for today. Our first vocabulary word for today is our first vocabulary word for today is tedious. Tedious is an adjective. Tedious एक adjective है जिसका meaning हिंदी में होता है थकाऊ, और you can say too long or slow or dull or tiresome or monotonous. So something which happens frequently, that is monotonous. Okay, एक काम करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं, that is called monotonous, or that is a tedious work. Right? Synonyms can be dull, unexciting, unvaried, mundane. These can be the synonyms. Antonyms can be exciting, interesting. ये सारे इसके opposite words हो सकते हैं. ओके, तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करें? माई प्रोफेसर्स tedious हिस्ट्री लेक्चर्स हैव द एंटायर क्लास यॉर्निंग. तो हमारे जो हिस्ट्री प्रोफेसर है उनके हिस्ट्री लेक्चर्स जो है वो बहुत टीडियस हो जाते हैं. मतलब इतने लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, इतने मोनोटोनस होते हैं और इतने बोरिंग लेक्चर्स होते हैं कि पूरा क्लास जो है वो यॉन करने लगता है. एंटायर क्लास यॉर्निंग. यॉन मीन्स in Hindi, I guess it's ubasi lena, or in Bengali we call it as haitola, right? So that is yawning. Okay, so we have our first idiomatic expression for today. What is it? It's spick and pan. So spick and pan. What is the meaning of this idiomatic expression? इसको कहाँ use कर सकते हैं? इसका meaning क्या है? समझ लेते हैं. Spick and span means neat and clean. So if something is neat and clean, you can call it as spick and span. So sentence में इसको कैसे use करें? The house was spick and span when the guests arrived. तो जब guests आए थे तब घर जो था वो बिल्कुल neat and clean था. Jane must have been cleaning for hours. तो Jane शायद बहुत घंटे पहले से घर को साफ करने के लिए लगी हुई थी. Right? Our next vocab is disposition. Disposition is a noun. ये एक noun है. इसका meaning हिंदी में होता है स्वभाव. In English you can say a person's inherent qualities of mind and character. तो एक इंसान अंदर से कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, उसके qualities of mind कैसे हैं, this is called disposition. Synonyms can be nature, temperament. Antonyms can be disinclination. These can be the antonyms.
How to use it in a sentence? Although he may look ferocious, my pit bull has a gentle disposition. तो मेरा जो पिटबुल है मेरे घर में वो शायद फिरोशियस दिखता होगा, मतलब डेंजरस दिखता होगा, लेकिन वो बहुत जेंटल डिस्पोजिशन का है, मतलब उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव बहुत जेंटल है, राइट? बहुत काम एंड क्वाइट इज हिज नेचर. Our next vocab is honest. Honest is a very common word. Honest last कुछ सेशंस में हम लोग ऑनर्स बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ. ऑनर्स इज़ अ नाउन जिसका मीनिंग होता है भार हिंदी में, और यू कैन से समथिंग दैट इज़ वॉन्ट्स ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मेरा कोई ड्यूटी हो या मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑनर्स, राइट? सिनोनिम्स कैन बी बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन. These can be the similar words. Opposite words can be advantage, benefit, blessing. These can be the opposite words. So how to use it in a sentence? As your mother, it is my honor to prepare you for a successful future. तो मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस इज़ माई ऑनर्स टू प्रिपेयर यू फॉर अ सक्सेसफुल फ्यूचर, ताकि मैं तुमको एक सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करूँ, राइट? दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. Our next vocab is emblematic. So emblematic, what is the meaning of emblematic? Emblematic is an adjective जिसका meaning हिंदी में होता है प्रतीकात्मक, okay? Or you can say in English, serving as a symbol of a particular quality or concept or symbolic. So something which is symbolic or something which belongs to a particular quality. मतलब emblem से आया है emblematic. So emblem means a sign or a symbol. राइट? सो समथिंग विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी, कोई भी चीज़ जो कि कोई पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करता हो, पर्टिकुलर ब्रांड से बिलोंग करता हो, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्लेमेटिक. सिनोनिम्स कैन बी सिम्बॉलिक, रिप्रेजेंटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव. एंटोनिम्स कैन बी रिप्रेजेंटेशनल, realistic. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? Waving to someone is an emblematic way to say goodbye. तो गुड बाय बोलने का एक एम्ब्लेमेटिक वे क्या है? दिस इज वेविंग टू समवन. सो वी वेव, राइट? दिस इज कॉल्ड वेव करना. सो व्हेन वी वेव टू समवन, दैट मीन्स वी आर सेइंग गुड बाय, राइट? दैट इज एम्ब्लेमेटिक. आवर नेक्स्ट vocab इज इंटर्नमेंट. इंटर्नमेंट इज अ नाउन. इंटर्नमेंट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है नज़रबंदी, और यू कैन से द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड एज अ प्रिजनर, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजन्स. तो पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री रीजंस की वजह से आपको कहीं पे नज़रबंदी करके रखा गया है, मतलब आपको यू आर लॉक्ड समवेयर, कहीं पे आपको बांध के रखा गया है, या आपको किसी घर में ऐसे जगह पे रखा गया है जहाँ पे आप निकल नहीं सकते हो, राइट? यू आर बीइंग प्रिजन्ड, राइट? तो आपको जेल जैसे एक जगह पे रखा गया है. तो कन्फाइंड, दैट इज़ कॉल्ड कन्फाइनमेंट. Okay, confinement is a noun and confined is a verb. Okay, so internment का meaning क्या होता है? Synonyms इसके क्या हो सकते हैं? Restraint, restriction, entrapment. These can be the similar words. On antonyms इसके हो सकते हैं emancipation, liberation, redemption. ये सारे इसके opposite words हो सकते हैं. Sentence में कैसे use करें? More than 110,000 people were deposited in internment camps. तो internment camps में लगभग 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को डिपॉजिट कर दिया गया था, मतलब रखा गया था. So that is called internment camps. Our next idiomatic expression is come to think of it or come to think about it, right? तो ऑफ और ये अबाउट जो है ये इंटरचेंजेबल है. ये ऐसे भी हो सकता है कि कम, आपको ऐसा भी मिल सकता है कम टू थिंक ऑफ इट या फिर कम टू थिंक अबाउट इट. तो कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ पे हो सकता है, राइट? सो डोंट गेट कन्फ्यूज. कम टू थिंक अबाउट इट होगा तो अलग होगा, या कम टू थिंक ऑफ इट होगा तो अलग होगा. ऐसा नहीं है, बोथ आर इक्वल, राइट? प्रीपोजिशन कैन बी एनीथिंग. So what is the meaning of this idiomatic expression? Something that has just occurred to us as we speak. तो जब हम बात कर रहे हैं अचानक कुछ याद आया, that is called come to think of it or come to think about it, right? How to use it in a sentence? Come to think of it, add potatoes and carrots to the list.
तो अभी मुझे ख्याल आया या अभी मुझे याद आया, मेरे दिमाग में बस अभी आया, चलो लिस्ट में थोड़े आलू और कैरेट्स भी ऐड कर दो, गाजर भी ऐड कर दो, right? So that is, in this kind of a situation you can use this idiomatic expression, come to think of it or come to think about it, right? Our next vocab is mire, M-I-R-E, mire. मायर इज़ अ नाउन जिसका मीनिंग हिंदी में होता है कठिन परिस्थिति में फंसाना. सो विच मीन्स अ सिचुएशन और सर्कमस्टांस फ्रॉम विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्केप. तो आप ऐसे एक सिचुएशन या सर्कमस्टांस में फंस चुके हो जहाँ से एस्केप करना मतलब निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. दैट इज़ कॉल्ड अ मायर सिचुएशन. Synonyms can be entangle, embroil, enmesh, involve. These can be the synonyms. Antonyms can be cleanliness, solution, define, extricate. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? The woman worked 2 jobs in order to remove herself from the mire of poverty. तो ये जो महिला है ये 2 नौकरी करती थी ताकि वो अपने आप को पोवर्टी के मायर से हटा सके. सो व्हाट इज़ द मायर ऑफ पोवर्टी? पोवर्टी इज़ सच अ थिंग जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो जाते हो, जहाँ पे आप इंट्रैंगल हो जाते हो, मतलब फंस गए हो पोवर्टी में. दैट मीन्स यू आर इन अ शॉर्टेज ऑफ मनी. दैट इज़ व्हेन यू आर इन अ मायर ऑफ पोवर्टी. तो उससे आपको निकलना है, राइट? आप एक कठिन परिस्थिति में फंस चुके हो. दैट इज़ कॉल्ड मायर ऑफ पोवर्टी. Okay, so our next vocab is insight. Insight is again very common word. Insight एक verb है जिसका meaning होता है उत्तेजित होना in हिंदी. To encourage someone to do or feel something unpleasant or violent. तो किसी और को आप encourage कर रहे हो, किसी और को बोल रहे हो कि चलो चलो ये काम करो. हाँ, और वो काम जो है वो वायलेंट काम है, वो काम जो है वो नेगेटिव काम है. किसी भी इंसान को नेगेटिव काम के लिए उकसाना या करने के लिए इनकरेज करना, दैट इज कॉल्ड यू आर इंसाइटिंग समबडी, राइट? सिनोनिम्स कैन बी abate, agitate. Antonyms can be dampen, dissuade. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? Did you know you could be arrested for trying to incite an uprising against the government? तो क्या तुमको पता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आपने कोशिश किया कोई अपराइजिंग या कोई प्लान कर रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट और आप उसको इनकरेज भी कर रहे हो, आप उसको थोड़ा धुआं भी दे रहे हो, तब भी यू कैन बी अरेस्टेड, राइट? यू आर अ क्रिमिनल इफ यू आर प्लानिंग एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. दैट इज कॉल्ड इनसाइट. Our next vocab is acumen. Acumen is a noun. Acumen एक noun है जिसका meaning हिंदी में होता है कुशाग्र बुद्धि, और you can say the ability to make good judgments and take quick decisions. तो acumen का meaning क्या होता है कि आपके अंदर एक ability है, आपके अंदर एक power है जिसके यूज़ से या जिससे आप अच्छे जजमेंट्स या क्विक डिसीजन ले सकते हो, राइट? सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं श्रूडनेस, क्लेवरनेस, स्मार्टनेस. एंटोनिम्स हो सकते हैं गिललेसनेस, that you are not gill, that you are not having in gill, right? Gill has come from the word guilty, so that is called gilllessness. Okay, ingenuousness and artlessness. These are the opposite of acumen. So how to use it in a sentence? His sharp business acumen meant he quickly rose to the top. तो उनके पास बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छे acumen है, मतलब उनके बिजनेस को लेकर उनका जजमेंटल पावर, उनका क्विक डिसीजन लेना एंड सही डिसीजन लेना, दिस किसके वजह से क्या हुआ? ही क्विकली रोज टू द टॉप, मतलब वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन गए बहुत ही कम टाइम पे, राइट? आवर नेक्स्ट वोकैब इज़ प्लैकेट. प्लैकेट इज़ अ वर्ब जिसका मीनिंग होता है तसल्ली देना इन हिंदी, और in English you can say make someone less angry or hostile. So you are trying to make someone less angry. That means you are trying to calm down someone, right? Synonyms can be appease, assuage, conciliate, pacify. Antonyms can be aggravate, annoy, bother, provoke. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? I tried to placate the sad little boy by giving him a cookie. तो मैं एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत सैड है,
तो उसको मैं प्लैकेट करने की कोशिश कर रही थी, मतलब उसको भुलाने की कोशिश कर रही थी, उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी बाय गिविंग हिम अ कुकी। तो उसको एक कुकी देकर मैं उसको उसका दिल खुश करना चाह रही थी, राइट? दैट इज कॉल्ड प्लैकेट। आवर लास्ट vocab फॉर टुडे इज नज। नज इज अ वर्ब जिसका मीनिंग हिंदी में होता है प्रोत्साहित करना, और यू कैन से इन इंग्लिश कोक्स और जेंटली एनकरेज समवन टू डू समथिंग। तो आप किसी को इनकरेज कर रहे हो, मतलब बढ़ावा दे रहे हो, या फिर आप मोटिवेट कर रहे हो किसी को कुछ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड नजिंग और नज। Synonyms can be prompt, encourage, coax, stimulate. These can be the similar words. Antonyms can be discourage, dissuade. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? We are trying to nudge them towards a practical solution. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ मोड़ दे, मतलब वी आर ट्राइंग टू गाइड देम सो दैट दे गेट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, right? That is called nudging somebody. That means you are trying to encourage somebody or show them the correct path. That is called nudge, right? तो हमारा आज का लास्ट idiomatic expression क्या है? हमारा आज का लास्ट idiomatic expression है worm in the apple. तो एप्पल के अंदर वर्म हो जाएगा तो वो क्या खाया जा सकता है? नहीं। तो उसका मीनिंग क्या होता है वर्म इन द एप्पल का? वर्म इन द एप्पल का मीनिंग होता है द प्रेजेंस ऑफ समथिंग वेरी बैड इन द बेस्ट। मतलब शायद आप एक बेस्ट ग्रुप में हो, लेकिन आपके एक बेस्ट ग्रुप के अंदर एक लड़का या एक लड़की ऐसी है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो हमेशा ख़राब काम करती है, हमेशा किसी का ख़राब चाहती है, हमेशा चोरी करती है, हमेशा झगड़ा मारपीट करती रहती है। सो दैट इज़ व्हेन वी यूज़ दिस काइंड ऑफ अ फ्रेज वर्म इन द एप्पल। दैट मीन्स in a very best group, in a group where good boys and girls are there, who are very good in studies, who are first rankers, right, first graders. So there is a boy, maybe there is a boy or a girl who is not at all good. So that is when we use, when there is one bad thing in among many good things, right? There we use this kind of an idiomatic expression, that is worm in the apple. So let us see the sentence. There is nothing worse than getting a worm in your apple. तो worm in your apple से ज़्यादा ख़राब चीज़ और होता नहीं है, right? Why? Because they can destroy the whole group, right? They can destroy the best people. So that is when we use this kind of a phrase, worm in the apple. So guys, this was all about our top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials. I hope you liked the session. If you like the session, do click on the like icon, like the video, and comment in our videos. If you have any queries, any questions, do comment. I'll be there answering your questions. And if you are new to our channel, don't forget to subscribe and hit on the bell icon so that you get all the recent updates. See you next day, and till then, take care. Goodbye.